Brahmagupta section, Lavisha, can you tell me how to start the question? Brahmagupta section, Lavisha, are you there? Brahmagupta section, Lavisha is there? Okay. Alia from Brahmagupta section. Alia. Who is coming from Brahmagupta section? Come forward, any child. You don't know it means, Anna? You don't know how to do? Okay, listen here carefully. But in this question, you can see very well. See the figure first of all. There is a parallelogram. And in parallelogram, dimensions are given to you. 18 centimeter is the base. And the other side, BC, is given to you 12 centimeter. Right? Height is falling on BC and height is also falling on CD. It means when CD is not given to us, we can write it as 18 centimeter only. You know opposite sides of parallelogram are equal. We can write on our own. Okay, and please remember, whenever we write the area of parallelogram as B into H, please remember, wherever you are taking as base, height should fall on that. This is height and this is base. Please remember. If the height is falling on the other side, base is here suppose, height is falling on this side. So you take this as H. ओके जो उसका बेस होगा वही उसकी हाइट को कंसीडर करना है ये नहीं है कि बेस यू आर टेकिंग एज 18 एंड हाइट यू आर टेकिंग एज DM. You can't take it. Fine. They have a shape, particular shape. Because a base and which height is falling on that. In this question, two heights are there. One is known to you, other is unknown to you. We will be using that height जो हमें पता है, right? So first of all, we know area of parallelogram is equal to area of parallelogram. This is the representation of parallelogram is equal to base into height, right? Base into height. Which base and which height shall I take over here? Can you tell me? Please think it, beta. So many things are given to you in the diagram. Think it carefully. Which base and which height shall I take? Raise your hand who know it. Okay, then listen to me. Base is we are taking it as 12 and height we are taking as 10. We are taking this as base and this as height because both are known to me, right? So this will be 120 centimeter square. This is 120 centimeter square. Area of parallelogram we have come to know, right? Now we have to find the height. You can write again also area of parallelogram. Formula is same. Now we are considering another base and another height. Formula will remain the same. Another base and another height. You know which base you will take now. Please raise your hand. Who know which base we have to take now in the figure? Yes, Aryabhatta section last kar beta. Please come forward. Tell me which base and which height we are taking now. And here the height will be 10.
Yes, base will be what, beta? BA. Okay. Can we take CD also? They are same. Yes, we can. So we will be writing as CD because height is falling on CD. Height is on the opposite side, on the CD. So we take CD as a base and height we will be taking it as AL, which is to be found. Please find it, calculate. Good, beta, sit down. Put the value. Now, one thing is known to you, area is known to you. You can write 120 is equal to CD is known to you, 18 into AL, which is unknown to us. You can find AL now. Please check it what is coming. By chance the whole number is not coming, it is okay. You can write in fraction also. Okay. Please find it, beta. How much it is? Is it coming in fraction? Who have got 20 by 3? Raise your hand. Who have got it? Raise your hand. This is coming in fraction. Very good. Since this is improper, we have to convert it into that mixed fraction, right? So it will be 20 upon 3 QR by D. You know it, है ना? So you will be writing as 6 2 by 3 centimeter. Since these are MCQ question, you can match it when you will get the module, right? 6 2 by 3 is the option. AL height is coming out to be this centimeter. By chance it is of subjective question, then you can find in decimal also. But here the option are given in fraction. So we are matching with that. So we are writing it as 6 2 by 3 centimeter. Okay. I want to do one more question of that kind जो अभी किया था पीछे हमने height and that one. Let us do. This is not in module, but I want to do it for you. Suppose a triangle is given to you, right? There are two heights. One is here and one is over here. These are perpendiculars. It is of the same kind. The way it was given in parallelogram, two heights were given to you. Same in triangle, two heights are given to you. Their dimensions are like this. This is ABC triangle, right? D is the height, AD is the height, and CE is the height. Both are altitude on different sides, right? It is given to you. This is as 7.5 centimeter. This also has 7.5 centimeter. Same, right? And height is given to you 6 centimeter. AD is given to you 6 centimeter. You have to find CE. Right? One more thing is given to you. This is 9 centimeter. Draw the diagram. All the information is known to you now from the diagram. You have to find CE. Follow the same process, whatever you did in parallelogram. Same process karo. Again, in this triangle, two bases are given to you and two heights are given to you.
Why I am saying two bases? Why two bases I am saying? Triangle में तो एक ही base होता है. We say half of base into height is the area. Why I am saying that two bases are given to you? Archimedes section. Be ready. Ekam Jyot. Please come beta. Ekam Jyot is present. Raise your hand. Okay, first child, first bench पे जो बच्चे बैठे हैं, Archimedes section, middle row. Are you finding this question to be difficult? Raise your hand. Okay, who are finding it easy? Raise your hand. Okay, but these questions are very, very important. If you don't know, it is okay. Listen to me carefully then. These are very, very important. And this is the difficult part also, I know. Not easy. I'm explaining you once again. Same thing we did in parallelogram. We know area of triangle is equal to half of base into height. This is the formula. We always start the question from a formula. Okay. I am telling you two bases are given. Why I am saying two bases? कि one base we will consider as 9, जिसके ऊपर height is falling, right? Other base we will consider as AB, on which other height is falling. Okay. But problem is we don't know height of CE. We cannot start the question from here. So we will start from those dimensions which are known to us, in which we know base also and height also. And you can see very clearly that if I consider base as BC and height as AD, both are known to me, we can find the area. That's why we have chosen, first of all, let us start from this base and this height, so that we can find area. Okay, please do it. You know all the dimensions are given to you. Find the area of triangle. Put the values. See the diagram. Small numbers are there. Start doing. Aryabhatta section. Trisha, have you found the area? What is coming to them? 27 centimeter square is the area. 27 centimeter square is the area. Use this area for the other base and other height. Good, beta. Sit down. Again, we can write also area of triangle is equal to half of base into height. Again, we can write the same formula because we have to use it. Now we will use base as different. Which base? This one, AB, and height as CE, which we have to find out. Okay, use the values. You know areas. A triangle to same ही है. Same figure is there. Area will remain the same. Okay, you can use it as 27 is equal to this all. 27 is equal to 1 by 2 into AB is known to you, that is 7.5 into CE. You can find CE from here. You have done simple equation chapter. You know how to transpose
how to take the numbers on the other side. Please find out CE. Nobody's telling me answer from Archimedes section. What's the matter? Please come forward yourself who have found CE from Archimedes section. Anybody? You're still doing. Yeah. Okay, this is decimal number. You have to be careful. Okay. From Euclid section, have you done? Yeah, first girl, beta. You are raising your hand, I know. First girl in the middle row. Have you found? Beta, please remember the transposition which you did in simple equation chapter. Okay. You know CE we have to leave alone because we have to find it. We have to transpose other numbers on the other side. 2 is dividing here, we will take it on the other side, it will be multiplied. And 7.5 is multiplied here, we will divide it. It will become 7.5. Yeah, please tell me, beta, Archimedes section first child. Yes, tell me what is coming, beta. You have found it. You were raising your hand. 7.2. Yeah, 7.2 centimeter. You are hesitating in standing, I know. You have to come near the mic to speak the answer. Okay. 7.2 centimeter is the right answer. This is the height of triangle which was not known to us. These are very, very important question. Parallelogram also very important question. This triangle also very important question in which bases, different bases are there and different heights are there. Very, very important question. Please practice this at home also. Okay, fine. I am going to ask you the assertion reason questions. Okay, assertion first question is altitude of a triangle whose area is 45 centimeter square. Assertion reason first question number 1. Altitude of a triangle. Altitude is what? If area is given to you as 45 centimeter square and base as 15 centimeter. They are saying that altitude is equal to 6 centimeter. Is it true or false? Please check it. This is assertion question. They are saying altitude of a triangle is 6 centimeter if area is 45 and base is 15 centimeter. Please check it and tell me this is true or not. Is it true? Raise your hand. Wonderful. Few children have found this was very small calculation. This is true. Yes, assertion is true. Reason is area of triangle is equal to half of base into height. Base into height. You know, whenever in assertion reason it is written properly in spelling form, not B and H, because proper meaning, proper word is written there, base and height. This you know, all of you, this is true. Okay. Both are true. In both the questions you have applied this formula. Both are related. That's why option is A. Especially when both the statements, yes, beta. The question is false, I think. Maybe Yes. Area is given to you 45 centimeter square. Right? 545. Okay. This is not 16. This is 6. Please remember.
Have you done it? Let us do it. Half of base into height. This is given to you 45. Area is this. Base is given to you 15 into height is equal to 45. Let us take all the numbers on the other side. It will be 45 into 2 upon 15. Right? Have you done it in lowest form? Have you cut it? 9 fives are 45, 5 threes are 15. Again by 3 it is going to be 6 centimeter. Are you taking it as 16? This is actually 6. Okay. This is not 16. This is 6 centimeter. So that's why it is true. Your doubt is clear? Take care. Whenever you do such questions, take care. Okay, especially when you are transposing the number on the other side. Multiplication will be divided and division will be multiplied. Take care. Is it clear? Chalo, see you next time, beta. Please revise these and you will get the module also by that time. So see you next time.
हाँ जी बेटा, आपने करो, जरा ऑन करो। एवरीबडी, अपना माउस लगाओ ना फटाफट से। हाँ जी, यूक्लाइड्स, आर्किमिडीज, ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त बेटा। हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। जरा मैं आपका थोड़ा सा रूम सेट कर लूं। हाँ जी बेटा, आर्यभट्ट, आर्किमिडीज, यूक्लाइड्स, ब्रह्मगुप्त। Am I audible to you? Raise your hands. Okay. चलिए, वेरी गुड। चलिए एवरीबडी, यूक्लाइड्स, आर्किमिडीज, आर्यभट्ट, जूम से अपना माइक ऑन करो और एकदम क्वाइट बैठना ताकि दूसरों को डिस्टरबेंस ना हो। ब्रह्मगुप्त, so how were your exams? Good? Okay, very good. चलिए, so ब्रह्मगुप्त अगर बातें करोगे तो फिर नहीं काम चलेगा, है ना। यूक्लाइड्स, सीधे होके बेटा, एंड डोंट मूव इन द क्लास। चलिए यूक्लाइड्स, आपके पास कैमरे का कंट्रोल होगा, थोड़ा सा अपनी क्लास को ऊपर करना। आपके पास जो कैमरा है ना, उससे नियर कैमरा करोगे तो थोड़ी सी सेट हो जाएगी आपकी क्लास, इफ यू कैन डू। चलिए, नो प्रॉब्लम अदरवाइज। सो लिसन हियर। सो व्हेन यू ब्रीथ एयर, जरा लंबा सा सांस लो। डीप ब्रीथ, where the air goes, where the oxygen goes. Yes, Archimedes, middle row, last girl, last bench पे जो गर्ल्स बैठी है, राइट गर्ल,
कम नियर माइक, आ जाओ बेटा। when you breathe in, when you inhale, where the oxygen goes ultimately? in the लंग्स में जा रही है। यस, बैठो बेटा। आर्यभट्ट, आर्यभट्ट रोल नंबर 6, आर्यभट्ट रोल नंबर 6, आ जाओ। राइट, थोड़ा सा क्लास को थोड़ी सी और ऊपर करो। आर्यभट्ट, टेल मी वेयर द ऑक्सीजन गोज इनटू लंग्स, बट वेयर द ऑक्सीजन वेयर ऑक्सीजन इज यूज्ड? आर्किमिडीज, बेटा चुप बैठोगे एकदम। आर्यभट्ट रोल नंबर 6, वेयर द ऑक्सीजन इज यूज्ड, कहाँ यूज होती है? इन द रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन तो ठीक है, बट कहाँ रेस्पिरेशन हो रही है? किडनीज में हो रही है, ब्रेन में हो रही है, लंग्स में हो रही है, हार्ट में हो रही है, या हर सेल में हो रही है? रेस्पिरेशन अकर्स इन वेयर इट अकर्स, जल्दी से आर्यभट्ट रोल नंबर 6। It occurs in all the cells, each and every cell of the body. बैठो बेटा, roll number 6, sit down. So it occurs in each and every cell of the body. सेल हमारे फुट में भी है, सेल हमारे ब्रेन में भी है। So oxygen has to reach each and every cell of the body, right? So Euclides, Euclides में बेटा roll number 11, आजा बेटा, आजा आजा आगे आजा। और कोई क्लास नहीं बोलेगी बेटा? हाँ जी बेटा, यू हैव टू टेल मी, आई होप माइक इज वर्किंग देयर। हाँ जी, अब मुझे ये बताइए बेटा कि हाउ द ऑक्सीजन गोज फ्रॉम लंग्स टू ऑल द सेल्स ऑफ द बॉडी? मैम थ्रू ब्लड, वेरी गुड। द ऑक्सीजन गोज टू ईच एंड एवरी सेल ऑफ द बॉडी बाय ब्लड। ब्लड इज द ट्रांसपोर्ट मीडियम, राइट? चलिए अब हम कुछ पूछते हैं। नेम द टिश्यू, ये लिखते जाना है। एवरीबॉडी राइट डाउन द टिश्यू विच हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस। द टिश्यू, लिखते जाओ। द टिश्यू दैट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट होता है कैरी करना, ट्रांसपोर्ट substances in our body is, स्पेसिफिकली हम कह देते हैं ब्लड, साथ में ही लिम्फ, blood and lymph, the tissue that transports substances from one part of the body to another. So blood and lymph are tissues. Remember that. यहाँ पे स्टार डाल के लिखना है। टिश्यू क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल्स, राइट? टिश्यू मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू का मतलब होता है, अभी मैं सिर्फ ये बताऊंगी, ग्रुप ऑफ सेल्स। ब्लड एंड लिम्फ दोनों क्या है? बोथ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। लिखो फ्लूइड, क्योंकि दोनों लिक्विड है। ब्लड एंड लिम्फ आर बोथ आर फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है जी। फ्लूइड मीन्स
which can flow. Fluid का मतलब है which can flow. They can be both liquids and gases. Solids तो नहीं हो सकते ना, दोनों liquids and gases को, but we say they are fluids. ठीक है जी, चलें आगे. So now, can you see it? लिखो फिर जरा जल्दी से. Anika is pale in color, feels very lethargic. Lethargic means restless, means बहुत ढीली ढाली. Less energetic. Lethargic means less energetic. यहाँ पे आपने basically you have to tell me. First is name of disease. Second is disease cause. Why no or less energy? हाँ जी, ब्रह्मगुप्त. ब्रह्मगुप्त बेटा, रोल नंबर 21. रोल नंबर 21 नहीं है तो 23 आ जाइए. 21 आ रही है, आ जाओ जल्दी से. कम. हाँ जी बेटा, तो पर्सन कोई और नहीं बात करेगा बेटा. ओनली रोल नंबर 21 ब्रह्मगुप्त. स्पीक लाउडली कि अनिका इज सफरिंग फ्रॉम विच डिजीज. क्लास 6 में पढ़ा है आपने. Yes, there is one hand in Brahmgupta. हाँ जी बेटा, आप आओ. The boy who is raising hand, आ जाओ, आगे आओ. Anemia. Very good. Both students sit down. चलो अपनी सीट पे चलिए. The name of the disease is anemia. Disease cause, caused by. Yes, Euclides. Euclides, roll number 16. Roll number 16. If 16 is not there, then 17. हाँ जी, बोलिए. It is caused by disease anemia. किस लिए होता है बेटा? किस कारण से है? From? हाँ, नहीं बेटा नहीं. Any other student from Euclides? ये क्या हुआ? एक मिनट, एक मिनट बेटा.
बेटा एक मिनट, लेट मी सी कि ये ब्लैक क्यों हो गई है स्क्रीन। बेटा आवाज आ रही है? जरा हैंड रेस करो अगर आवाज आ रही है तो। यस, चलिए इतनी देर हम जरा कैमरे का देखते हैं, आप लिखिए जरा। तो ये डिजीज किस कारण है? दिस इज एनीमिया caused due to deficiency of iron। लिख लो, caused due to deficiency of iron, due to which there occurs deficiency of, there occurs deficiency of hemoglobin, deficiency of hemoglobin। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, लिथार्जी क्यों है? बिकॉज हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, बिकॉज हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, therefore deficiency of hemoglobin, deficiency of hemoglobin causes less transport of oxygen to the cells। और ऑक्सीजन नहीं तो फिर रेस्पिरेशन भी नहीं, और रेस्पिरेशन नहीं, नो ऑक्सीजन या लेस ऑक्सीजन, लेस रेस्पिरेशन, लेस एनर्जी। लेस ऑक्सीजन, लेस रेस्पिरेशन, लेस एनर्जी। ठीक है जी, चलिए देन वी कम टू, चलिए राइट डाउन दिस। ये सब फिफ्थ क्लास से पढ़ रहे हो बेटा। राहुल हैज हाई नंबर ऑफ WBCs इन हिज ब्लड टेस्ट रिपोर्ट। लिख लो, राइट डाउन दिस क्वेश्चन। राहुल हैज हाई नंबर ऑफ WBCs in his blood test report. His doctor prescribed certain antibiotics to him. His doctor prescribed certain antibiotics to him. आगे क्वेश्चन लिखिए। What does high WBCs in blood indicates and why? What does high WBCs in blood indicates and why? What is the role of antibiotics? B option, B question है, what is the role of antibiotics to lower down WBCs? चलिए ये वॉलंटरी क्वेश्चन है। Who will tell me the answer? Who will tell me the answer? Yes.
ढीले बच्चे हैं बेटा। अच्छा मुझे ये बताइए, ट्रांसपोर्ट इन ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स एंड प्लांट्स किस किस सेक्शंस में शुरू हो गया है? आर्यभट्ट में शुरू हो गया है। यस, यूक्लाइड्स, हैव यू स्टार्टेड? अगर किया है तो हाथ रेज करो, हैंड रेज करो। Excuse me, ma'am. हाँ जी, आर्किमिडीज में शुरू हो गया बेटा। Ma'am, today just our units are over. So just an overview today I have given to these classes. ओके, Archimedes नो and प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। ठीक है uh, जी। by next STEM class by Friday we will try to be over it. ओके ओके मैम, थैंक यू। सो बेटा, ब्लड, Ma'am, हाँ जी, yes. ध्यान से अब देखना है बेटा और लिख लेना। ब्लड कंपोनेंट्स, फ्लूइड प्लाज्मा, the fluid part of the blood is called as plasma, and there are present cells, right? ये जो है, this is fluid plasma, और इसके बीच में there are blood cells, abundant blood cells, right? So which are these cells? Red blood cells, white blood cells, and platelets. लिखते जाना है साथ साथ। Red blood cells, white blood cells, and platelets. What is the function of this fluid plasma? Write down functions of plasma. Transports, क्या ट्रांसपोर्ट करता है प्लाज्मा? फर्स्ट इज ग्लूकोज, सेकेंड इज मिनरल्स सच एज, आपको ये साइंस नहीं पता होंगे शायद, सोडियम, पोटेशियम, etc. Then transport प्रोटीन्स एंड फैट्स। जो कोलेस्ट्रोल है वो भी कहां पे है? प्लाज्मा में है। यहां पे लिख रही हूं ट्रांसपोर्ट वेरियस वाइटामिन्स एंड ऑल्सो ट्रांसपोर्ट वेरियस वेस्ट। फॉर रिमूवल जाना पड़ेगा उनको एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स के पास। सो दैट आर द फंक्शंस ऑफ फ्लूइड प्लाज्मा। Then what is the function of cells? Red blood cells, RBCs, red blood cells. Another name is
एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स आपको किसी ने पूछना नहीं है इस लेवल पे, बट आई एम टेलिंग यू बिकॉज ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। आपके ओलंपियाड्स में कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम है तो वहां आ सकता है। आरबीसी, एरिथ्रो का मतलब होता है, लिखो, एरिथ्रो मतलब रेड। द इंग्लिश मीनिंग ऑफ एरिथ्रो, ERYTHERO, एरिथ्रो मीन्स रेड। So red blood cells are erythrocytes. Remember that. Most abundant cells in our body. Smallest cells in our body. सबसे छोटे है, बहुत ज्यादा है। रेड ब्लड सेल्स रेड क्यों है? रेड इन कलर ड्यू टू, क्या है इसमें? ड्यू टू अ पिगमेंट called hemoglobin. ठीक है जी, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में बताया है, हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू cells of our body. And you have studied in class 6, sorry, yes, class 6, that hemoglobin formation requires oxygen. Sorry, requires iron. I'm sorry. If there is deficiency of iron, there will be deficiency of hemoglobin. If you say the basic structure of cell you have studied, हमने जो थोड़ा सा पढ़ा था जब हमने शुरू के प्लांट न्यूट्रिशन किया था सेल के बारे में, डू यू नो द मेजर कंपोनेंट ऑफ द सेल इज, क्या है? न्यूक्लियस। डू यू रिमेंबर? कितने बच्चों को याद है न्यूक्लियस? किस किसने सुना है? यस, वेरी गुड, सभी ने सुना है। तो बट यहां पे ये क्या है? टू अकोमोडेट more of hemoglobin, RBCs lose their, ये लिखना है बेटा आपने, lose their nucleus during maturation. During maturation, the RBCs lose. ये इसका क्या मतलब है? When the RBCs are formed, they have the nucleus, but when they mature,
they attain more and more hemoglobin. Therefore, they lose their nucleus. And one more important thing, that specific blood group, हम कहते हैं हमारा ए ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है, ओ ब्लड ग्रुप है. सो स्पेसिफिक ब्लड ग्रुप is due to specific proteins on surface of species. So which blood cells are responsible for our blood group? It is RBCs. RBCs के सरफेस पे एक प्रोटीन होता है. अगर मेरे पास ए ब्लड ग्रुप है, किसी के पास बी है, तो दोनों के प्रोटीन डिफरेंट होंगे. Okay, done. चलिए. So this is about RBCs. And remember that one more thing. स्टार डाल के आपने पॉइंट लिखने हैं. Lifespan of RBCs. कितने दिन जिंदा रहते हैं? 120 days. New RBCs are formed by liver, bone marrow. Bone marrow बेटा एक टिश्यू होता है हमारी बोन्स के अंदर, एक्सेट्रा. 4 months. They live for 4 months only, after which they die. Next is WBCs, white blood cells. WBCs, full form is white blood cells, also called as leukocytes. Leuko means colorless. Leuko का मतलब लिख लेना colorless. Larger than RBCs, have nucleus. इनमें न्यूक्लियस होता है, and these act as policemen of our body, army of our body, which protects us from diseases. Now tell me, if in our country there occurs some attack at some region, maybe Rajasthan, maybe in Srinagar, Kashmir में कोई attack कर दे, so what will happen? Will the army decrease or will the army increase? जल्दी से इंक्रीज हो जाएगी. अब ये आंसर करो, लिखो ये क्वेश्चन और आंसर करो. क्या हो गया?
हाँ जी, लिखो ये क्वेश्चन। व्हाट डज हाई WBC, किसी जगह पे आर्मी बहुत ज्यादा हो तो हमें, या पुलिस ज्यादा आ जाए तो हमें लगता है यहाँ पे कोई झगड़ा हो रहा होगा जरूर कोई, है ना। तो आप मुझे बताइए कि अगर ब्लड में हमारे हाई WBCs है, व्हाट डज इट इंडिकेट्स? हाँ, इट इंडिकेट्स सम, yes Euclid, somebody was telling me the answer. क्या इंडिकेट करता है हमें ये पुलिसमैन क्यों है? इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम डिजीजेस कॉज्ड बाय जर्म्स, माइक्रोब्स, बैक्टीरिया, वायरसेस. इट मींस हाई WBCs इंडिकेट सम इन्फेक्शन इन अवर बॉडी, कोई ना कोई माइक्रोब हमारी बॉडी के अंदर है, राइट? सो व्हाट डज दिस इंडिकेट? It indicates some infection in Rahul's body. एंटीबायोटिक्स क्या करती है? व्हाट इज द वर्क ऑफ एंटीबायोटिक्स? यस, यूक्लाइड्स. यूक्लाइड्स का माई कौन है? कोई और भी बता सकता है? ब्रह्मगुप्त में रोल नंबर 5, रोल नंबर 5 ब्रह्मगुप्त, आ जाओ बेटा, कर माइक ऑन कर और बताओ कि हाउ, व्हाट इज द एक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स? क्या काम करते हैं एंटीबायोटिक्स बेटा? आपका बेटा माइक ऑफ हो गया ब्रह्मगुप्त. Yes, they kill microbes, they kill germs, right? So, antibiotics lowers infection by killing germs या microbes. Less infection, less WBCs. ठीक है जी. तो WBCs RBCs का नंबर, नॉर्मल पर्सन में RBCs का नंबर ज्यादा होना चाहिए, WBCs का नंबर कम होना चाहिए. This means the person is healthy. Next is platelets. The third blood cell is remember that platelets are fragments, छोटे pieces है, pieces और fragments of cells, कुछ cells के pieces है, no nucleus, helps in blood clotting. ब्लड क्लॉटिंग का क्या मतलब है? दैट इज सीलिंग ऑफ ब्लड वेसल्स इन इंजर्ड रीजन्स. जहां पे इंजरी होती है वहां पे ब्लड वेसल्स लीक करती है, due to which the blood comes out, but after some time the blood stops.
due to presence of platelets. Platelets seal the blood vessels. Next time I will show you the animation how the platelet seals the blood vessels. अगली बार मैं एनिमेशन आपको दिखाऊंगी. अब अगला क्वेश्चन जो है दैट विल बी फ्रॉम आर्यभट्ट, इसलिए ध्यान से ये लिख लो. I think you have done so. If a person has less or no platelets, what will be the effect if he gets injured? Write down. If a person has less or no platelets, what will be the effect if he gets injured? Yes, Aryabhat. Yes, there is one girl. आ जाओ बेटा, आगे आओ. मिडल रो में से जिस लड़की का हाथ खड़ा है आ जाओ और बेटा माइक ऑन करो और फिर आंसर दो. Now, if there will be no platelets, the blood will continuously flow and the clots will not form. That is why there will be the deficiency of blood in the heart. Very good, very good. So what will happen? No platelets. No platelets means no blood clotting. In injured blood vessels. Due to which blood flow continuously. Name the disease in which blood platelets gets lowered. जल्दी से बताओ. Raise your hands. Name the disease. सबको पता होगा बेटा. Name the disease in which blood platelets gets lowered. जोर से बोलो. Dengue. If you are saying dengue, then it's okay. It is dengue in which blood platelets gets lowered. ठीक है, तो हम क्या है, ध्यान से बेटा, कि डेंगू में क्या होता है, बाहर से ब्लीडिंग नहीं होती है. हम कहते हैं कि प्लेटलेट्स लोअर हो गए, नाक से ब्लीडिंग होगी, मुंह से खून आना शुरू हो गया और इंसान जो है द पेशेंट डाइड. तो वो खून मुंह से नाक से काहे को आया, क्यों आया? उसको इंजरी तो कुछ नहीं हुई, वो गिरा नहीं, कुछ नहीं. सो व्हाट हैपेंस इन अवर नॉर्मल बॉडी ऑल्सो, हमारे में अभी भी अंदर कई जगह इंजरी हो रही है, कई जगह ब्लड वेसल्स की इंजरी हो रही है, बट इट गेट्स ट्रीटेड ऑटोमेटिकली ड्यू टू प्लेटलेट्स. बट in patients of dengue, in extreme cases, if the blood platelets gets lowered too much, then internal bleeding starts. How? Because the injured blood vessels, they do not get healed. उनका blood clot नहीं होता, इसलिए internal bleeding हो जाती है. जब body में bleeding हुए जा रही है कहीं ना कहीं, then the blood comes out through mouth, through nose. यहां से blood आना शुरू हो जाता है और अंदर प्रॉब्लम होके the person dies. Right? So this is about platelets. अब बेटा नेम द ऑर्गन, पहले ये बताइए. क्वेश्चन लिखिए थोड़ा सा. नेम द ऑर्गन which removes carbon dioxide and adds oxygen in blood in fishes, earthworm,
cockroaches and humans. जल्दी से ये लिखिए फटाफट. Name the organ which removes carbon dioxide and adds oxygen. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा बोलिए. This time, ma'am, please add Archimedes. By mistake, it was left. The meeting was left. We are in the waiting room. हाँ वो मैम I joined them. I had admitted them. Please, ma'am. So Archimedes, write down this question. Name the organ which removes carbon dioxide and adds oxygen in blood. In fishes में, earthworm में, cockroaches में और humans में organ बताना है जो CO2 रिमूव कर रहा है और ऑक्सीजन ऐड कर रहा है ब्लड में. Yes, Archimedes. Roll number 23. रोल नंबर 23 जल्दी से बताओ बेटा. आ जाओ, ये तो पुराना क्वेश्चन है. यस. फिशेस में गिल्स. वेरी गुड. अर्थवॉर्म में स्किन. कॉकरोचेस में चलो ये मैं बता देती हूँ. ट्रेकिया. एंड ह्यूमंस में लंग्स. वेरी गुड. दिस इज एब्सोल्युटली ट्रू. Now my question is, write down another question. If heart does not purify blood, हमने कहा lungs purify करता है. Then what is the function of heart? What is the function of heart? Anybody? हाँ बोलिए. मुझे सुन नहीं रहा. यूक्लाइड जरा थोड़ा सा पीछे होके जोर से बोलो. हाँ दोबारा से. इट के लिए होता है मैम. ब्लड पंप करने के लिए मैम. it helps in pumping of blood, right? So answer is heart pumps blood to each. कौन सा blood? Purified blood to each and every part of our body. जैसे आपके घरों में टैंक तो है पानी का, ठीक है, बट आपकी जो टॉयलेट है उसमें पानी नहीं आ रहा क्योंकि जो आपका पंप है, वाटर पंप है, वो खराब हो गया. ठीक है, क्योंकि ऊपर चढ़ाने के लिए छत पे जो टैंकियां है उन पे चढ़ाने के लिए, उधर तक पानी पहुंचाने के लिए, दूर दूर एरियाज में पानी पहुंचाने के लिए द पंप इज रिक्वायर्ड ऑल्दो वाटर इज इन द टैंक. सो ऑल्दो लंग्स प्यूरिफाई ब्लड, but to transport blood, to pump blood to all the parts of the body, what is required? Heart is required. ठीक है जी. क्वेश्चन है मैथमेटिकल क्वेश्चन है, जल्दी से, क्योंकि हार्ट बीट वगैरह हम बाद में बताएंगे कि क्या होती है क्या नहीं, बट let me ask one mathematical question. If one breath takes 5 seconds, what is the
BREDTH, ये कर लेना. What is the rate of heartbeat? आप नहीं, यूक्लाइड्स नहीं, आर्किमिडीज. somebody from आर्किमिडीज, जल्दी से. What is the rate of heartbeat? 5 seconds में 1 heartbeat है. What is the rate of heartbeat? हाँ जी, कौन बता रहा है मुझे आर्किमिडीज में? 33 रोल नंबर, 33 रोल नंबर आर्किमिडीज. क्या आ जाएगा आपका आंसर? बोलो, एक बोलो आंसर. हाँ, 12. Let's see that. Let's see. Key. 5 seconds में there is 1 beat. Rate means in 1 minute means 60 seconds. 1 minute में there is 1/5 into 60 और काटोगे it is 12. This is absolutely correct. So 12 beats, 12 heartbeats per minute. 12 heartbeats per minute. ठीक है, जरा क्वेश्चन लिखिए फिर दोबारा से फटाफट से करके लाओगे. if the rate of heartbeat is 15 beats per minute, if the rate of heartbeat is 15 per minute, if the rate of, हम suppose कर रहे हैं, if the rate of heartbeat is 15 per minute, comma, what is the time taken? What is the time taken for 1 heartbeat? ऐसे नहीं, 1 heartbeat. ऐसे तो मैंने सुनना ही नहीं, ऐसे सुनना ही नहीं. Yes, from Aryabhat. Yes, there is 1 girl. आ जाओ बेटा, बताओ. Seconds per how many flights? That's 4. Yes, it's 4 seconds. कैसे निकालेंगे? 60 seconds में हम कहेंगे 15 heartbeats in 60 seconds. 1 beat in 60 over 15. 15 fours are. So 4 heartbeats per minute. ठीक है जी. So this is for today. है ना, इसमें से हमने बहुत क्वेश्चंस करने हैं, बहुत रीजनिंग क्वेश्चंस करने हैं. बट इन दिस कमिंग वीक और इन द नेक्स्ट वीक यू कैन से आपका ये चैप्टर काफी हो जाएगा. देन वी विल अगेन meet on next Friday and we will do many reasoning questions about this chapter. Okay beta, bye bye. Thank you teachers. बेटा उधर से जरा डिस्कनेक्ट कर लो.